Good evening, ladies and gentlemen. Namaste. I'm Daksh. I'm the founder of Blub World. A very warm welcome to all of you to the Blub World Web Talks 146th episode. Thank you so much for joining in. And today we'll be talking about something that's kind of controversial. And why would I say it's controversial? Because ये ऐसी controversy है जो कि हर घर में हर रोज हो रही होती है, क्योंकि हमारे बढ़ते बच्चे हमें हर दिन चैलेंज कर रहे होते हैं और उन टीनेजर्स का एम्पावरमेंट हम बहुत बार डाइजेस्ट नहीं कर पाते. तो आज के अगले 60 मिनट जो आप हमारे साथ में हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे हमारे एक्सपर्ट से कि when the teen is getting empowered, does it need more empowerment or should I be using it for it or should I be using teens for it? क्योंकि हम गुस्से में बहुत बार उन बच्चों को बच्चा समझना छोड़ देते हैं. हम उन्हें बहुत ज्यादा मैकेनिकली डील करने लगते हैं, बहुत मैकेनिकली हैंडल करने लगते हैं. तो what should be the right way of handling empowered teens and at the same time how should we empower them further? Because when we talk of teens, तो बहुत सारी एनर्जी है, बहुत सारा आइडिएशन है, बहुत सारा इनोवेशन है, with absolutely no prejudice. क्योंकि prejudice वो अब सीखेंगे और हम जब इतने सारे पूर्वाग्रहों से ग्रस्त होकर दुनिया में घुसते हैं, तो things change a lot for us. Thank you so much everyone for joining in once again. Before we start, just two important things of the platform. This is a timed platform. It's not a speaking marathon, it's a speaking sprint. So once your speaking time is over, you might get muted. If you get muted, please don't get offended. It is just to finish the activity on time and to keep it crisp. And most importantly, remember, once the first session of speaking is over, there will be an open floor. So if you missed out something, you can tell us that at the end of it. This is a bilingual platform, so you can use English or Hindi, any of these two languages, but try sticking to these two because I don't know a third one. But if you want, you can still use it. Try sticking to these two. So thank you so much, everybody for being a part of the Blub World Web Talks 146th edition. And let's talk about empowering teens. A very warm welcome to all the speakers. So today we have a special speaker with us who will bring in an experience that comes from international examinations to finally now an organization that is trying to consolidate the K-12 education system in India. So let's try to know from him, how does he think about empowering teens or handling the empowered teens. A very warm welcome to Mr. Vikram Shah, Chief Business Officer from No Paper Form Solutions Private Limited, Gurgaon, India. Vikramji, over to you for the next 4 minutes. Please unmute your audio and a very warm welcome. Thank you so much, Daksh. Can you hear me? Yes. So thank you so much, Daksh and Blub World for organizing this session and inviting me to share my views with respect to empowering teens. And clearly, I feel that if I have to start with respect to empowerment, when you think about empowerment, to empower is to actually infuse with power or ability in an individual. So many teens do follow the superheroes, and clearly in Spider-Man, one of the lines is clearly mentioned with respect to with power comes responsibility. So in terms of empowering and infusing power and ability in someone, I feel that it is very important for teenagers to be thinking, discerning, and caring individuals who are capable of making their good choices in all areas of life. And personally, I feel that these are the few ways. I have some 3-4 things which I've thought about on this topic in which you can actually empower a teenager. First of all, clearly you can empower a teenager by actually let them make their own choices. Rather than you enforce a choice on a teenager, as kids get older, actually they should start making their decisions. Eventually, those decisions sometimes go in the right direction, sometimes don't go in the right direction. But clearly, I think from an empowering point of view, I feel that we should give them opportunities wherever possible, help them work through the pros and cons of the choices so that they can build their decision-making skills. Eventually, they will have to lead their life. And as they get older, and once they face the outside world and outside influences, it will be easy for them to make a right kind of a choice. So I feel that one of the things which we should do as seniors of these teens is to ensure, or as parents, teachers, guides, coach, that we should let them make their own decisions, which is very, very important. But at the same time, handhold them initially, share with them the pros and cons of the choices, and help them to actually continuously take on such decisions in their life for their future.
Also, I feel that the other thing which we can do with respect to empowering teens is to ensure that let them have their consequences as well. And I feel that obviously we say in our overall saying, it's that you learn from others' mistakes, and that's the saying which we have. But at times it's not easy to actually think about what the other person is doing, and how that mistakes have ended up in what that person has been doing or has done in life. So I feel at times it is very, very important for us to ensure that the teens have uh, their consequences of the decisions which they have made. And obviously, as a parent, you will try and will always ensure that your kid is kind of covered, and you want to give the best kind of advices. You don't want the kid to actually feel bad about something, and actually reap some unknown consequences for some decisions which he or she has made. But I feel that at the same time, when they make a poor choice of something, instead of jumping into the conclusion, I feel that let them actually go through the consequences at time. And it should be a very small thing, I think, rather than a big decision. If they continuously make their choices, and at the same time we ensure them that they make good choices, but at the same time, if the choice is bad, sometimes it do happen that you think all from all angles, but the decision doesn't come out to be good. So let them also go through their consequences of the decision. Obviously, I also feel that. Thank you so much, Vikram. So the first 4 minutes were over, but we'll try to again come back to you. जहाँ पे आपने कुछ इंपॉर्टेंट बातें कही जो कि आगे इस डिस्कशन में ले जाई जा सकती हैं. That with power comes responsibility. I think Spider-Man ये तो एक सिखा ही सकता है बच्चों को एक चीज, that with all the power that you will be getting as a teenager, जितनी decision making आपको आपके हाथ में आ जाएगी, इतनी इंडिपेंडेंस, इतनी फ्रीडम आ जाएगी, उसके साथ में काफी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आएगी. एंड शायद वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाने का ही आपका सेकंड हाफ ऑफ द डिस्कशन था कि लेट देम टेक दोस डिसीजंस एंड लेट द बैड चॉइसेस हैपन टू देम. उन्हें वो करने दीजिए, उस एक्सपीरियंस के थ्रू निकलने दीजिए, बिकॉज दैट्स द वे दे लर्न एंड दैट वुड बी अ लर्निंग दैट विल स्टिक विद देम, क्योंकि बाकी सारी डायडैक्टिक होगी, ये एक्सपीरियंशियल होगी. सो थैंक यू सो मच विक्रम जी फॉर सेटिंग द टोन राइट. लेट मी इनवाइट द नेक्स्ट स्पीकर फॉर टुडे, क्योंकि अब हम जिन स्पीकर से सुनने जा रहे हैं they are handling a lot of students. तो उनके लिए empowerment कभी भी एक इंडिविजुअल टीम से ज्यादा शायद एक बहुत बड़े ग्रुप का हो, और वो भी ऐसे वो उनको आप ये भी कह सकते हैं they are the empowered teams. तो उन empowered teams को आप कैसे हैंडल करेंगे जिनके पास में दुनिया की सारी सहूलतें हैं, जिनके पास में खर्चा करने के लिए हर लिमिट तक बजटिंग है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली दे आर राइट नाउ इन द प्रोसेस ऑफ वन ऑफ द फाइनेस्ट education systems or education ecosystems that we know, because once you try to tackle these teens, the situation, the commitment, the strategy, everything gets a complete changeover. So let's listen to Mr. Kesar Dopsai, head of school from Poddar Rohati International School, Mumbai. Kesar sir, over to you for the next 4 minutes. Please unmute your audio and a very warm welcome. Yeah, now I got it. You didn't give me your voice. You took away my voice. Okay. All right. Good evening. And just wanted to carry on from where Vikram said. Well, I think what you need to look at when looking at empowering students is that you need to take a holistic view of things. And perhaps empowerment has to be a part of the philosophical pillars of an institution. It has to be mission driven, right? Otherwise, it's a piecemeal action happening, perhaps, accidentally or coincidentally or randomly, versus it being versus that being the aspect of the academic climate of the community. A school is a community, right? So I think that's the holistic approach. So really, when we are talking about empowering students, in pedagogical terms, we call it giving student agency, which is called voice, choice, and ownership. So I think that's the drive. Then that voice, choice, and ownership becomes the pillars of your institution. It's mission-driven institution, and that part of it is there. Then other pieces start falling in place. So perhaps some of us are a little blessed that we have the choice, voice, and ownership
as to how to run programs, and maybe the IB program or IGCSE program or whatever programs we have. And with the national education policy going the way it is, hopefully will go. I don't say it cynically, but I say it with a lot of hope that things would probably look there. So that's one part. I think we need to understand that it cannot be a strategy. It needs to be a part of a game plan. It needs to be a part of a whole, mission out there. As I say, we are not here to, I tell my students, we are not here to compete, but we are here to complete each other. And there's only one difference between compete and complete, is just the missing of the L. And then when that as a community takes it, right, then generically you create what I call as the change makers, right? As that critical mass which you create in an organization, which brings about that change. So I think that building of critical mass is important. Then rest from the pillars, how do you do it pedagogically? How do you do assessments need to be much more what you're doing, much more based on reflection other than simply addition and subtraction and those kinds of stuff. And the discipline part, which Vikram kind of pointed out, all right. I think that's when they make decisions and they do have consequences. What is the pillars of disciplining? That's where it comes, where consequences stems from. And I think consequences should stem from the idea that it is a responsibility model of discipline rather than an obedience model of discipline. So you see, you got to change so many pillars before you just say empower students, is my summation of the things. And when you think of people who are perhaps more affluent and having access to, things which perhaps the common man does not have, well, that does not make him a brat. In fact, schools which educate. Thank you so much, Kaiser. The 4 minutes were over, but we'll again come back in the open session. I think you added a lot of points to the complete discussion, जो कि what I could say, education pedagogy wise काफी influential है, काफी important है, that can actually be taken ahead. You started with not a piecemeal interaction. ये एक बार का interaction नहीं होना चाहिए. It should be a thing that you involve, and most importantly, student agency part of the curriculum. क्योंकि आप उसको हमेशा एक parallel practice बना के रखते हैं, तो उसको कभी उतनी importance मिल नहीं पाती. So it has to be a part of the game plan and not just a strategy that works for a month or two. It has to be a part of the complete developmental process of the child or the teenager. And finally, जो आपने एक जो बात और ऐड करी, voice, choice and ownership. I think ये 3 शब्द हैं जिनको हमें कहीं ना कहीं अपनी रोजमर्रा की जो SOPs हैं उनमें इन्वॉल्व कर लेना चाहिए. That when you're talking to teenagers, always take care that ये तीनों चीजें उनके साथ आप ध्यान रखें. Giving them the voice, giving them the choice, and finally letting them own what they did. वो ओनरशिप नहीं होना चाहिए. पहले 2 दे दिए, तीसरा नहीं दिया तो ज्यादा बड़ा चैलेंज हो जाएगा. इन तीनों को एक साथ चलना होगा हर समय पर. And as you said, NEP से सबको बहुत सारी उम्मीदें हैं. And yes, we are not saying that cynically, and we are saying that with a lot of hope, क्योंकि वो अब जरूरत हो गई है, वो एक लग्जरी नहीं रह गई है किसी के लिए भी. Because with the kind of scenario that we are in, we need that kind of an education system. Most importantly, आपने जहां पे जाके इस चीज को कंप्लीट किया कि रिस्पॉन्सिबिलिटी का मॉडल हो डिसिप्लिनिंग में, ना कि ओबीडियंस का. क्योंकि हम एज अ पेरेंट एंड एज अ इंस्टीट्यूशन, व्हेनेवर वी ट्राई टू डिसिप्लिन नंबर्स, हम ओबीडियंस मॉडल ही इस्तेमाल करते हैं, एंड व्हिच इज समथिंग दैट हैज बीन, दैट्स ऑब्सोलीट नाउ, एंड दैट मस्ट नॉट बी यूज्ड, और रादर शुड बी, उसका प्रिवेंशन होना शुरू हो जाना चाहिए, वेरी एक्टिव प्रिवेंशन ऑफ इट. बिकॉज व्हेनेवर यू गो फॉर ओबीडियंस, आप हमेशा सामने से रिवोल्ट वापस अपने लिए लाएंगे. एंड आई डोंट थिंक दैट रिवोल्ट इज अ गुड स्ट्रेटजी टू टीच. It's a good strategy to innovate, to disrupt, but it's a very bad strategy to teach. And वहीं पे आपको उसको responsibility model पे shift कर देना चाहिए. Thank you so much, Kaiser sir. Let me invite the next speaker for today, Dr. Vivek Nanoti, Principal, Priyadarshi Institute of Engineering and Technology, Nagpur, Maharashtra. विवेक जी से हम जानना चाहेंगे कि जब ये टीनेजर्स थोड़े और ज्यादा डिसीजन मेकिंग करने लगते हैं और बहुत सारी इंडिपेंडेंस आ जाती है, आपके पास एक अलग स्ट्रेटा का टीनेजर आता है, उसको आप कैसे डील करते हैं? क्योंकि वो अपने साथ में बहुत सारे अधिकार लाता है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी लाता है, लेकिन उससे ज्यादा वो आपके पास आने तक एक बहुत बड़ा पैकेज ऑफ एक्सपेक्टेशंस लेके आता है. तो उसे डील करने के लिए या उसको फर्दर एम्पावर करने के लिए आप क्या करते हैं? लेट्स ट्राई टू नो फ्रॉम यू. वेरी वार्म वेलकम टू द प्लेटफॉर्म. द नेक्स्ट 4 minutes are yours. Please unmute yourself. Thank you so much. Thank you so much, Daksh. Good evening to all
all the big in the field of education. Thank you so much for making me part of this. Daksh, what I feel like into 30 years into engineering education and seeing thousands of students coming with a lot of hopes and absolutely with no hopes also. Some parents जिन्होंने को ढकेल दिया है, जा engineer बन जा, and he never wanted to become an engineer. Kind of students also come to our colleges, and people wrongly got admission into mechanical, and their dream was like computer science engineer. तो ये वाले बच्चों को भी हैंडल करने का अभी बहुत सा तजुर्बा हो गया है. The most important point what we do at my college, would like to share my experience is that is we create a space and time for wherein I have a four big halls wherein the place and the time allotted is for doing what they love to do. There is no syllabus, there are no teachers, there can be mentor on invitation, but there is an open space. We call it as a knowledge cafe. We call it as an innovation lab. You call anything, but I wish that every college, at least graduation level, you must provide a space and time for students to explore their own. Students are amazing these days. They have self-learning. उनमें बस सेल्फ लर्निंग डालना है मेरे को. तो सबसे पहली बात है कि उनको स्पेस और समय मिलना चाहिए जिस स्लॉट में वो अपना खुद का पैशन आइडेंटिफाई करे, न कि इंटरेस्ट बदलते रहते हैं, पैशन हमेशा चलता है. सो पैशन आइडेंटिफाई करके उसके पीछे जाने के लिए उसको मदद करें, हैंड होल्ड करें, और उसके लिए उसको उसके प्रोज एंड कॉन्स, जैसा सर ने बताया, विक्रम सर ने, वैसा उनको देना चाहिए. Second important point I always want to tell every student, I tell that whatever degree he is pursuing, BSc, BCom, BA, Chartered Accountant, what are those additional competencies, skills and knowledge he is going to add to his profile before he graduates? I mean during graduate के बाद नहीं चलेगा. During graduation, what are those add-ons he is adopting is to be listed and to be mentored separately. Otherwise, he will be of no use. He will be, out of the crowd of unemployed youth running on the roads. So, वो add-on क्या है? Coding है, वो soft skills है, वो managerial skills है, वो team building है, वो leadership है, वो debugging है, वो digital content development है, वो उसका कुछ भी हो सकता है. वो technical add-on क्या है? उसकी जो field है, जो डोमेन नॉलेज है, उसका एक्सटेंशन क्या है, वो एड ऑन उसके साथ अगर नहीं रहा तो हिज डिग्री वुड कम डाउन एज पर हिज वर्थ मच बिलो व्हाट ही एक्सपेक्ट्स, एंड लॉट ऑफ इश्यूज विल बी कमिंग अप देन. थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, प्लान बी. आई ऑलवेज टेल स्टूडेंट्स प्लान बी. You are an engineer, fine, but I have my own students who are earning more into the evening 2 hours by conducting their passion piano classes, and they are earning 60,000 per month ऑन पियानो कोचिंग क्लासेस. दिन भर इंजीनियर है, शाम को 2 घंटा मजा भी आ रहा है. तबला क्लास 30,000 के, मैकेनिकल स्टूडेंट मेरे क्लास का. सो अर्न एंड लर्न हैज टू गो हैंड ऑन हैंड. वी मस्ट गिव स्टूडेंट्स अपॉर्चुनिटी टू लर्न, टू अर्न. आई एटलीस्ट they should visualize their workplaces, future workplaces, internship, articleships. This concept अभी भी बहुत कम है. इंजीनियरिंग में इंटर्नशिप्स अभी बहुत आ रहे हैं पिछले 2 साल से, but not in every profession. If somebody. Thank you so much, Vivek sir. 4 minutes खत्म हो गए, but yes, you added a lot of important points. I'll try to summarize some of them. That आपके पास जो 2 कैटेगरी साइमल्टेनियस आती है वो अपने आप में एक पैराडॉक्स है, विडंबना है. Lots of hope and with absolutely no hope. इन दोनों को साथ में टैकल कर पाना बहुत टिपिकल है. एंड उसके लिए आपने जो कॉन्सेप्ट दैट यू यूजिंग विद इन योर इंस्टीट्यूशन ऑफ दैट स्पेस एंड टाइम फॉर पैशन एंड देयर लव, कि वो करना क्या चाहते हैं, उसके लिए एक जोन बना देना, एक जगह दे देना, जिसको आप नॉलेज कैफे कह रहे हैं, कोई इनोवेशन लैब कहे, कोई कुछ भी कहे, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्रिएटिंग दैट जोन कि जहां वो अपने आप से बात कर सके, सेल्फ इवैल्यूएशन कर सके, अपने पैशन को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर सके, या थोड़ी देर के लिए वो स्टूडेंट से एक्सप्लोरर बन सके. क्योंकि वो एक ऐसा स्टेज है जो कि हम बच्चे को स्कूल में भी बहुत जल्दी पार करवाना चाहते हैं, कि उसका एक्सप्लोरेशन खत्म हो, डिसीजन मेकिंग हो, और हम उसे सॉर्ट कर पाएं. क्योंकि इतने बड़े एजुकेशन सिस्टम में जब हम बहुत सारे लोगों को पढ़ाना शुरू करते हैं तो सॉर्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है. तो ये स्पेस अगर उसे वापस ग्रेजुएशन में मिलती है तो इट विल रिजुविनेट हिज इंटरेस्ट इन हिज लर्निंग और हिज प्रोसेस ऑफ एजुकेशन. आपने जहां आगे जो बात करी कि एडिशनल कॉम्पिटेंसीज, कि अभी क्या है, यू कैन नॉट जस्ट रिलाई ऑन दैट वन डिग्री दैट यू आर डूइंग, आपको उसके साथ में you'll have to add a lot of things.
बिकॉज आपकी प्रोडक्ट कंजम्पशन भी वैसा ही है, या तो साथ में ऑफर चाहिए, नहीं तो साथ में एडिशनल प्रोडक्ट चाहिए। वैसे ही हर एम्प्लॉयर को भी हर इंडिविजुअल एम्प्लॉई के साथ या इंडिविजुअल हायरी के साथ में कुछ ना कुछ एडिशनल कैपेबिलिटीज चाहिए होती हैं, जो कहीं ना कहीं उसे स्टैंड आउट करवाएं या उसे क्राउड का पार्ट ना बनने दें। एंड फाइनली आई थिंक जिस बात पे आपने कंक्लूड किया कहीं ना कहीं, that visualization of the future workplace, I think this is very important, and I think ये should also be a part of the school curriculum कि आप बच्चों को कहीं ना कहीं वो रियल लाइफ एक्सपीरियंस देके एटलीस्ट वो उनकी इमेजिनेशन में लाना शुरू कर दें कि आप जब बड़े हो जाएंगे, what is the kind of a future that you want, trying to build a canvas of their own careers, trying to paint that okay, this is the kind of a life that I want। क्योंकि if I ask you, all of you right now, जो अपने अपने जीवन के इतना समय प्रोफेशनल लाइफ का निकाल चुके हैं, आई डोंट थिंक कि हमने भी कभी जीवन में कोई एक कैनवास अपनी जिंदगी का ड्रॉ किया है। हमने कहीं छोटा मोटा कुछ कुछ कभी लिख दिया हो, ठीक है, लेकिन हमने उसको विजुअलाइज करने की कोशिश शायद नहीं करी। और कभी कभी मिड लाइफ क्राइसिस जिसे हम कहते हैं, हम वो ब्रेक इसीलिए ले रहे होते हैं क्योंकि हमें जिंदगी को रीविजुअलाइज करना होता है। सो थैंक यू सो मच विवेक सर। लेट मी इनवाइट द नेक्स्ट स्पीकर फॉर टुडे, Dr. Suchitra Bhattacharya, Principal Manav Rachna International School from Chambud, Delhi. Suchitra ma'am, over to you for the next 4 minutes. Please unmute your audio, and a very warm welcome. Good afternoon. In fact, good evening to all the panelists. It's wonderful to come on such a platform again. To talk about the empowerment of the teenagers, I will go to a little, because I am a school principal since 10 years as a head dealing with the teenage children. And I'll tell you, as a young teacher and of course as a principal now, time is really beautiful to spend with these adolescent children. That's excellent to see the dream that is there in their eyes. And I think we have a responsibility to understand the patriarchal ways that things are changing. You know, everyone wants an identity, be it a girl, be it a boy, they want an identity. And I think I will have the first word for them is trust. If we trust them, we can see the result to be absolutely different. We will have to ensure that we give them that opportunity. As you were just saying, yes, we need to give them the opportunity in every respect. We need to take care of their mental health. What do they want? That's something. Instead of putting on them that this is what you need to do as parents, as teachers, that's what we've been doing, that this is the roadmap that you need to follow. Instead of that, we need to understand what is their call, what is their dream, what is their capability, and what is their interest. If we know this, I think our job will be very easy and their journey will be absolutely smooth. Most of the time, we as seniors, you know what we do? We give them the solution that this is exactly what you need to do and this is how you need to follow. Instead, give them that opportunity. Let them explore. It's very easy to say, but you know, when it comes to your own self, when it comes to your own child, when it comes to your own children in school, you have 10 limitations. So that is where I think we as educationists, we as leaders, we as seniors, we fail to follow the path. You know, we need to tell the children to explore, have them the trust for them, and of course tell them it's okay if they make mistakes. And it's always better to share your own experiences, how you made a mistake and how you learned from your mistake. Unless and until we share with them about our mistakes, I think they will not venture into something new thinking about a failure. So it's okay to fail. We need to encourage them. That is something which is a must. And as I said, a motivation is, we need to be just beside them to motivate them that yes, we are there to be there, be beside if they go wrong, but then let them explore. And as you were saying, these days we have started, in fact most of the high-end schools or big schools, you know, giving them the internship from class 8 onwards. I think that's something excellent that's happening, giving them the exposure of different areas. They could spend a few hours, few days, or like 1 or 2 days in all different areas. Maybe if someone wants to go for becoming pilot, give them the exposure. Maybe hotel management, give them an exposure. Oblique, any field. I think if we give them the opportunity, if they give them the scope, they can explore. And of course, I'm quite scared when you put me on mute. So just give me an okay, I will stop. So well, I'll repeat that, yes, giving them an opportunity, I think, is something which we can really do. And children come up with wonderful ideas. So let us learn from them
and proceed. I think that's the best way to empower them. Thank you so much, Uchita ma'am. And yes, learning from them is a way to empower them. कि कहीं ना कहीं उनसे हम सीखना शुरू कर दें. What you said, I'll try to summarize some of those points. Everyone wants an identity. Now these teenagers are very conscious about the way they are perceived. ये perception conscious हैं. तो जब ये perception conscious हैं, I think this is where the solution to empowering a teen lies. कि कहीं ना कहीं अगर आप उसकी perceptive analysis कर पाएं या आप ये समझ पाएं कि वो अपने आप को कैसे position करता है, that is where I think you have the sweet spot. कि जहां पे वो आपकी बात भी सुनेगा, आप जो कहना चाह रहे हैं वो शायद अपने अंदर आत्मसात भी कर ले ओवर अ कोर्स ऑफ टाइम. जहां आपने कहा बिल्डिंग ट्रस्ट या ट्रस्टिंग देम, वही ओनस भी देना है और साथ में विश्वास भी करना है कि ठीक है हमें पता है गलती हो रही है बट कर लो, बिकॉज वंस यू डू इट फ्रॉम योर ओन हैंड यू विल हैव दैट फॉर योर लाइफ टाइम. क्योंकि एक बहुत बड़ा जो हमारी सोसाइटी के अंदर मतलब आई शुड नॉट से इट्स अ चैलेंज बट इट्स अ काइंड ऑफ अ ट्रेडिशन दैट वी फॉलो. वी ऑलवेज वैल्यू एक्सपीरियंस मोर देन एक्सपेरिमेंटेशन. हमें इन दो ई को जो है आपस में इंटरचेंज करना होगा और एक्सपेरिमेंटेशन को थोड़ी ज्यादा वैल्यू देनी होगी, क्योंकि दुनिया का चेंज का जो पेस है वो बहुत ज्यादा है और उसे एक्सपीरियंस हैंडल नहीं कर पा रहा और उससे सॉल्यूशंस नहीं हो रहे. सो व्हेन डिसरप्शन कम्स फ्रॉम इनोवेशन, आई थिंक एक्सपेरिमेंटेशन शुड ऑलवेज बी प्रेफर्ड और गिवन अ मच हायर पेडेस्टल कंपेयर्ड टू एक्सपीरियंस. इसका मतलब ये नहीं कि हम बुजुर्गों की इज्जत करना छोड़ दें, बट एट द सेम टाइम यू मस्ट अंडरस्टैंड कि जब आपको इनोवेशन चाहिए तो आपको एक्सपेरिमेंटेशन की, एक्सप्लोरिंग की जगह देनी होगी. The further what you said, let's stop solving their problems, let them solve it, let them find a way for it, then you can take them ahead with the kind of experience that you have and the story that you have. And अपने failures हमेशा याद रखिए और उन्हें भी गिनाते रहिए, because those are the real learnings that they'll take away from you. जैसा कि हम लोग Blub World Web Talks में हमेशा करते हैं, we always try to create a variety of perspectives to come in. और उसीलिए हम हमेशा ज्योग्राफिकल वेरिएशन बहुत बड़ा रखते हैं. सो टुडे आल्सो वी हैव समबडी फ्रॉम द टियर 2 टियर 3 सिटीज ऑफ इंडिया, ताकि हमें वो पूरा स्पेक्ट्रम देखने को मिले कि टीनेजर जब कॉलेज में है तब उसका कैसे एम्पावरमेंट हो रहा है, जब एक अच्छे व्हाट यू कैन से व्हाट आई वुड रादर से एक बहुत ही एवोल्यूटेड एजुकेशन पेडागोजी के अंदर है तब कैसे हो रहा है, एंड फाइनली जो हमारा मास एजुकेशन सिस्टम है जो कि सच में देश भर में है उसमें वो कैसे हो रहा है. सो वेरी वार्म वेलकम टू मिस्टर राजेंद्र मिश्रा, प्रिंसिपल अरविंद इंडो पब्लिक स्कूल फ्रॉम काटोल, नागपुर, महाराष्ट्र. राजेंद्र जी, ओवर टू यू फॉर द नेक्स्ट 4 minutes. प्लीज अनम्यूट योर ऑडियो एंड अ वेरी वार्म वेलकम. आप एम्पावर कैसे कर रहे होते हैं उन एम्पावर्ड टीम्स को? Good evening, Daksha and all the panelists. Firstly, the topic is a very, very interesting topic because empowerment of teenagers, it is first time we are giving the opportunity to our teenagers to take the decision. Till the time in India, in every family, in every school, everywhere, we are just giving the instructions to our students. You have to do these things, you have to do that thing, but we have never given choice. You have to decide what you want to do. So that is a big change, and we are hopefully we will get good results. एक विशेष चीज मैं कहना चाहता हूँ सर कि हमने जो सिस्टम बनाया है अपना, especially education में, I completed my 34 years in this field, and I interacted with more than every year 1,000 to 1,500 students in my school. टीनेजर्स जो भी हैं सर, उनको हम समझना ही नहीं चाहते हैं. हम उनको सिर्फ घर में बोलिए या स्कूल में बोलिए, कहीं भी बोलिए, सोसाइटी में, उनको कोई डिसीजन मेकिंग में, पावर में उनको शेयरिंग करने का भी अधिकार नहीं है. उनके साथ एक ही ट्रीटमेंट होता है, दिस यू हैव टू डू इन दिस वे. हम उनको प्रॉब्लम भी देते हैं और प्रॉब्लम को करने का उनको एक तरीका भी बता देते हैं. तो कहीं भी उनके अंदर एक इनोवेटिव माइंड जो डेवलप होनी चाहिए या अदर स्किल्स डेवलप होनी चाहिए, वो कभी डेवलप नहीं होती है. सिस्टम जो हमारा एजुकेशन का है, उसका सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है कि इसमें सिर्फ पेन पेपर टेस्ट वाला जो एक क्राइटेरिया हमने अपने देश में आज तक अमल किया है कि ये एग्जाम है, ये इसका सिलेबस है, ये इसका रिफ्रेशर है, ये इसके नोट्स हैं, आपको याद करना है, आपको एग्जाम देना है और उसके बाद प्रमोशन होके नेक्स्ट क्लास में आपको चली जानी. तो इसमें कहीं भी उस बच्चे का जो रियल टैलेंट है वो कहीं भी सामने नहीं आता है, और अनफॉर्चुनेटली उसका रियल टैलेंट तो खत्म हो जाता है, क्योंकि उसे कभी मौका ही नहीं मिलता है कि मैं किस लिए आया हूँ इस दुनिया में, मुझे क्या करना है. तो वो सिर्फ एक लेबर के जैसे, एक वर्कर जो है, मैनेजरियल स्किल उसके अंदर कभी नहीं आती है. हमने हमारे स्कूल में 6th 7th 8th के बच्चों के लिए एक वर्कशॉप इसी तरीके से लाके उसके रिजल्ट्स देखे थे कि अगर हम इनको एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर में अगर कोई वर्कशॉप कराते हैं कि इफ यू विल गेट सच टाइप ऑफ अपॉर्चुनिटी, व्हाट यू विल डू. पहले ऐसा लगा था कि नो, इट इज नॉट फॉर
such type of students below age 15. But unfortunately, they enjoyed the workshop, and they have very good solutions. They have very good ideas, innovations, what they can do, how they can sell the things, even how can do the marketing. तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी उनको मिल रही है, और इससे सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि दे विल गेन द कॉन्फिडेंस, जो कॉन्फिडेंस नहीं है उनमें, क्योंकि हर जगह हम अपनी इच्छा सौंपते हैं. अनफॉर्चुनेटली दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आवर कंट्री आल्सो. वी आर अ गुड प्लानर बट वी आर वेरी पुअर इम्प्लीमेंटर. तो ये सिचुएशन से हमको बाहर उबारने के लिए ये जरूरी हो जाएगा कि ओके, यू शुड मेक द प्लान अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एंड यू शुड सर्च द सॉल्यूशंस आल्सो. तो यहाँ डायरेक्शंस की जरूरत नहीं रहेगी, या उनके अंदर एक, जिसको हम कहते हैं डायनेमिज्म, उनके अंदर एक डेवलप होगी कि हम पे फेथ किया गया है, ओके लेट अस डू समथिंग. और जिस तरीके से टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है उसमें नथिंग इज इम्पॉसिबल, बिकॉज अभी जो टीनेजर्स हैं दे आर more qualified in the field of technology. They are knowing how to use the things. और जिस तरीके से पूरे दुनिया में चेंज हो रहे हैं, पूरा ग्लोबल सिनेरियो चेंज हो रहा है, तो उसके हिसाब से आफ्टर 12 इयर्स वैसे भी एक जो पुराना अनुभव है कि 12 साल के बाद आप अपने किसी भी बच्चे को चेंज नहीं कर सकते, उस पर अपनी. Thank you so much, Rajendra sir. वो 4 मिनट पूरे हो गए, but whatever you added, I'll try to summarize that. हम लोग केवल इंस्ट्रक्शंस की भाषा में बिलीव करते हैं, ओबीडियंस में बिलीव करते हैं, और हम ये भूल जाते हैं कि उनकी भी एक चॉइस है, या कहीं ना कहीं उन्हें कुछ बोलने का अधिकार है, क्योंकि घर पे भी उसे कंट्रोल करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि उसका डायनामिज्म उस समय पर अपने हाईएस्ट लेवल पे होता है. देयर इज अ रिसर्च दैट जस्ट गॉट कंक्लूडेड, दैट वाज डन बाय ऑक्सफोर्ड, कि व्हेन यू टॉक ऑफ ह्यूमंस, ह्यूमन काइंड एवोल्यूट्स एट द मैक्सिमम पेस ड्यूरिंग 2 एज रेंजेस. वो पहली एज रेंज होती है जब आप पैदा होने से लेके 4 साल के होते हैं तब तक, और दूसरी एज रेंज होती है 13 से लेके 19 साल की. और जब हम एकदम छोटा बच्चा होता है, हम उसे कंट्रोल नहीं कर पाते, वो रोना शुरू कर देता है, हम उसे चुप करा देते हैं. और यहाँ जब 13 साल का बच्चा रोना शुरू करता है, तो उसका एक्सपोजर या उसका एक्सप्रेशन हम कंटेन नहीं कर पाते, इसलिए हम उसे चुप करा देते हैं. तो आई थिंक ये हमारा जो गो टू रिएक्शन है हमेशा चुप करा देने का, हमें इसको चेंज करना होगा एज अ सोसाइटी, दैट यू कैन नॉट always keep patting their back कि कोई बात नहीं बेटा चुप हो जाओ. ऐसा नहीं है. It's not something bad that's happening to him. It's a place, and he's in a place where he is given excess observation skills, ताकि वो अपने आसपास की दुनिया को ज्यादा समझ सके, ज्यादा क्वेश्चन कर सके. कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा और पेशेंट होना होगा. The way it was always said, it takes a village to raise a child. तो वो कहीं ना कहीं कम्युनिटी बनानी होगी, क्योंकि 2 पेरेंट इतनी पेशेंस नहीं ला पाएंगे, या एक स्कूल प्रिंसिपल या टीचर भी नहीं ला पाएगा, बट एक कम्युनिटी जरूर ले आएगी, क्योंकि कोई ना कोई इस बच्चे का सवाल का जवाब जरूर दे देगा. थैंक यू सो मच राजेंद्र जी. लेट मी इनवाइट द नेक्स्ट स्पीकर फॉर टुडे, मिस्टर सुशील शिंदे, फॉर्मर प्रिंसिपल ऑफ परवा सेंट्रल पब्लिक स्कूल फ्रॉम Parwar Nagar, Maharashtra. I hope I pronounce it right. Sushil, over to you for the next 4 minutes. Please unmute your audio, and a very warm welcome. First of all, gratitude for everything what you've done today, and you have done a wonderful job, Mr. Daksh, and holding the same thread which you have completed, that there are 2 phases child learns, from 1 to 12 and from 13 to 19. We are talking about 19s, all teens there. So in that case, from 1st to 12th year of age, children learn from everybody, like from school, teachers, parents, and everybody. What they see is the real world and genuine world, which we try to show them. At the same time, when they enter in teenage, from 13, when they try to understand, let me tell you frankly that they completely understand the world opposite what they really didn't see. And then they understand whatever we have learned till 12 years is something which our parents wanted to show, and let us see the world now. Now, considering the same facts and the causes around and the results around, I have jotted down few things which we really want to give them as tools, like empowering teens. उनको अगर हमें सच में सक्षम करना है, तो उसके लिए हमें उनको कुछ tools देने चाहिए. तो कौन से tools होते हैं? Those tools I would like to just recite in front of you here. Now, freedom is first tool which we should give them. Freedom with positive vigilance. Also, with zero interference, we should give them. First tool, if we give them, they'll understand what the world around is, so that they'll experience the power again with them. Second tool which I want to give them is, like, we should give them the art of introspection on any situation for solution and support.
Now we give them the solutions, we tell them that this is the solution. Let us train them for application of that solution, and let us train them how they should enjoy the journey of finding a solution. Third thing which I would like to give them as a tool, like our India or the Indian education system from generations together, is proposing and promoting the art of meditation. If we give them the tool of meditation, they will definitely understand and develop their own personalities and their growth they can experience. For personal development, meditation plays an awesome role. I have experienced with most of my students, wherein they meditate with me. And fortunately, God has helped me with musical abilities. So music can be a great helping hand for that. Next thing, as a tool I would like to propose to you all as an educationists, we can give them and teach them the significance and the quality of time. They should learn how and what is a quality of time. If they understand that, of course, they will be more empowered. Of course, next tool is respect. Respect for their parents' dreams and their own dreams. Let us understand that there is a big crowd of dreams in the minds of these teenagers. Let us train them to segregate and separate their own dreams and their parents' dreams and their friends' dreams and the society's dreams about them and for them, sometimes against them. So this art of separating and segregating dreams will definitely empower them. And last but not the least, what I would like to say is parents should show respect towards the friendship which these teenagers make around the society. Their friends physically who come to their life, their friends who are virtually connected to them, their friends who are really, really waiting for them in future. All sort of friendship which the children of this teenage are making, they should be given proper respect from the parents' side. These are the basic tools. If we really try to inculcate in them and empower them with these, of course, I can say that yes, we can be confident on empowerment. Thank you. Thank you so much, Sushilji. The list that you created, I'll try to put it together again for everyone. Freedom, positive vigilance, zero interference, introspection, journey of finding a solution, meditation, significance of time, respect, mental segregation, and finally, teens as peers या teens as friends and not as children. हम कहीं ना कहीं जो उन्हें पेट्रनाइज करने की कोशिश करते हैं उसे हमें छोड़ देना चाहिए. और इन सारे जो टूल्स जिनको आप लिस्ट डाउन कर रहे हैं, इन सारे टूल्स में से बहुत सारी चीजें काफी लोग ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहे होते हैं. आपने उसको अच्छी तरीके से आर्टिकुलेट करने की कोशिश करी. बट एक सजेशन जो दैट वी कैन ऑल टेक अवे फ्रॉम दिस इज कहीं ना कहीं वो म्यूचुअल रिस्पेक्ट बनाना या बना पाना इज समथिंग दैट वी हैव टू स्टार्ट एज अ प्रोसेस. बिकॉज हमारी जो आपस में व्हाट यू कैन से इंटरपर्सनल डिग्निटी एक्सचेंज है वो उतना अच्छा नहीं है व्हेन वी टॉक टू टीन्स, क्योंकि हम हमेशा इंस्ट्रक्ट करते हैं, वो रिवोल्ट करते हैं और वो कन्वर्सेशन की जगह आर्ग्यूमेंट हो जाता है. एंड वहां पे वो चैलेंज एकदम से इतनी सी बात से बहुत बड़ा हो जाता है. व्हाट यू कैन ऑलवेज रियलाइज व्हेन यू डील विद टीनेजर्स इज हम कंटेंट पे बहुत ज्यादा बात नहीं कर रहे होते हैं. हम टीनेजर्स को मेजरली बिहेवियरल कंट्रोल पे बात कर रहे होते हैं. हम उनकी भावनाओं पे भी बात नहीं कर रहे होते. हम अगेन उनके ऑपरेशनल कंट्रोल या बिहेवियर कंट्रोल पे बात कर रहे होते हैं. सो आई थिंक वन एक्टिविटी दैट ऑल द स्कूल्स शुड बी टीचिंग ऑल द पेरेंट्स कि व्हेनेवर यू आर टॉकिंग टू अ टीनेजर, टेक अ स्टेप बैक एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई कि मैं जो पूरी बात कर रहा हूं उसमें से एक्चुअल कंटेंट कितना है और कितना कंट्रोल मैकेनिज्म है. इन दोनों चीजों को हमें बार बार बैलेंस करने की कोशिश करनी चाहिए. नाउ बिफोर दिस कॉल कम्स टू एंड, हम लोग एक बार सारे स्पीकर्स की बात एक एक स्लॉट सुन चुके हैं. द नेक्स्ट सेक्शन इज एन ओपन फ्लोर. सो इफ यू मिस समथिंग, इफ यू गॉट म्यूटेड, कोई ऐसी बात थी जो रह गई या कोई ऐसा पॉइंट है जो कि आप अब ऐड करना चाहते हैं, सो यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ. इट्स एन ओपन फ्लोर. इफ यू वांट टू से एनीथिंग, इफ यू वांट टू ऐड एनीथिंग टू डिस्कशन, you can do it right away. The only request, please try to take care of each other while you're speaking. So anybody, if you want to add something, you can unmute yourself. Yes, Suchitra ma'am, please. First of all, we've all covered mostly all the work. I'll just give you a short example. I think as heads of institutions, there are many more. We have seen the naughtiest child or the child who's just not listening to anyone. There is somewhere down the line, somewhere where the child is misunderstood, and that's how it starts. So as seniors, I think we need to be very careful to ensure that the child is understood. Unless and until we understand the problem, it aggravates. So before it goes into a difficult situation
one little caring sentences, oblique one little attitude of understanding the child will just take away the problem from his life. So that's something which I always tell my parents, that instead of they trying to or you expecting them to understand, you need to understand your child. And I think if we do that, we'll be really helping the youth of today. यस कि अंडरस्टैंडिंग के प्रोसेस को रिवर्स कर दें कि आप उनसे एक्सपेक्ट करें, इससे अच्छा है आप समझना ज्यादा शुरू कर दीजिए, वो कैसा है वो एक बाद का जजमेंट होना चाहिए. हम बहुत जल्दी जजमेंटल हो जाते हैं. दैट्स द बिगेस्ट चैलेंज दैट हैपेंस, एंड आई थिंक उसको इंडियन माइथोलॉजी में बहुत अच्छे से समझाया है. दैट इफ यू हैव एवर रेड अबाउट इट, दिवाली के जो लास्ट दिन होता है जिसको भाई दूज कहा जाता है, उसको एक्चुअली हमारे जो ट्रेडिशनल त्योहार है उनमें उसको कहा जाता है यम द्वितीया. अब इसका कोरिलेशन बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते कि ये यम का दिवाली से क्या कोरिलेशन है. तो यम इज एक्चुअली द गॉड ऑफ अकाउंटिंग, द गॉड हु एक्चुअली जजेस पीपल. तो वो यम द्वितीया जो है उस दिन जो यमराज हैं वो आपके घर आते हैं. दैट यमराज कम्स टू योर हाउस आफ्टर दिवाली एंड दैट्स द यम द्वितीया. एंड व्हाई डज ही कम? व्हाई डज यमराज कम टू योर हाउस जस्ट आफ्टर दिवाली? So just after Diwali, Yavraj comes to your house to check on his sister. Ki how well are you keeping her? Because Lakshmi is the sister of Yamaraj or Yam Devta. So you must always remember, never judge anything. और ये ही इंडियन ट्रेडिशन में कहीं ना कहीं वो यही त्योहार बताता है कि जहां आपने जज किया, you have invited death. So judgment is equivalent to death. So never judge. पूरी जगह खुली रखिए, अपना mental perception, perspective सब खुला रखिए, or try to create a lot of mutual respect. So anybody wants to add something, you can unmute yourself. It's an open floor right now. Yes, Vivek sir, please. You can unmute yourself. Actually, I've covered 4 or 5 important points. Just last thing what I've found when I encourage students is, if you give us very smallest even opportunity to earn something, like even my first year students, when I asked to create an app, and I asked some company to pay him 10,000 for that app, creating that app. So he learns automatically the business tactics, the responsibility, the consultation, the expression, the logic, the मतलब सब कुछ वो सीखने का एक मौका आ जाता है. एंड उसकी टेक्निकल एबिलिटीज ऑफ कोर्स, बिकॉज ही इज एन इंजीनियर, सो टेक्निकल एबिलिटीज भी टेस्ट हो जाती है. तो एक मौका, जैसा हम उनको आर्टिकलशिप इंटर्नशिप की बात कर रहे हैं ना, वैसा आई हैव एन हैबिट, लाइक आई गिव माय थर्ड ईयर स्टूडेंट, आर्किटेक्ट स्टूडेंट, आई आस्क कि तू मेरे दोस्त का ऑफिस बना दे, थोड़ा रिस्क लीजिए बच्चों पे. दे आर वेरी इनोवेटिव एंड यू मे फाइंड दैट अ प्रोफेशनल आर्किटेक्ट से ज्यादा अच्छा हमारे बच्चे डिजाइन कर जाएंगे, बिकॉज दे हैव अ वेरी डिफरेंट विजुअलाइजेशन, दे ड्रीम अ लॉट एंड दे आर नेक्स्ट जनरेशन. तो ये थोड़ा उन पे ट्रस्ट करके उनको छोटा छोटा काम देना. मेरे यहाँ मैंने बहुत बच्चों को बहुत काम दिए एंड दे वर मोर सक्सेसफुल देन, और ऑलमोस्ट सेम, इक्वली सक्सेसफुल देन इन एनी प्रोफेशनल आईटी इंडस्ट्री कैन डू. बिग बड़ा ERP सेटअप मैंने सेट करा दिया है बड़ी इंडस्ट्री में, 3 बच्चे मिलकर, and they are now big wigs. They have offices in Pune and they are doing amazing into their career because that confidence booster was given into right second year only. So that confidence, if we can avoid, provide such opportunities, it works like anything. Right. उन पे थोड़ा सा रिस्क ले लीजिए, उन्हें कुछ ना कुछ रियल लाइफ दे दीजिए, सो दैट उनका कॉन्फिडेंस, एंड एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं इंप्लीमेंटेशन या एक्टिविटी होगी तो वो जीवन भर उसको अपने साथ कैरी करेंगे. आई थिंक विक्रम जी वांट्स टू से समथिंग, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ. Sure. I think the other important thing with respect to empowering teens is that we should teach them to take care of themselves. It is very, very important that they have right kind of eating and sleeping habits. It is very, very important for them to actually express their emotions, because it helps in understanding an individual in a better way. So giving them that priority, that your self priority, and you have to ensure that you take care of yourself for your betterment in the future is very, very important for parents, for teachers, for people like us to drive with them along the lines. Right. Taking care of themselves, कि हम उन्हें कहीं ना कहीं अपना ख्याल रखना सिखा दें कि अगर आप कभी कहीं फंस जाओ, कभी किसी चैलेंज में आ जाओ, तो हाउ डू यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बिकॉज चैलेंजेस आएंगे, इतने बड़े बड़े भी आएंगे कि आप उसके स्ट्रेस से थक जाए, तो तब आप अपना ध्यान कैसे रखेंगे. If anybody wants to add something, you can unmute yourself. It's again an open floor for this duration. I think Kaiser sir wants to say something. Sir, Yeah. I'll just very quickly enumerate the aspect that what are we looking at? We are looking at a 21st century child, right? So when you're looking at a 21st century child and you have a 19th century curriculum and you have a 20th century teacher,
I think there's something going wrong here, right? So I think that, so I kind of feel that the teacher at this age perhaps would be 21, you know what I mean? Being 2021. So they do need professional, development. So looking at this, I think we need to take a holistic view. We are trying to create servant leadership. I think the leadership aspect, whatever the other participants have, other panel members have articulated, it goes back to the point that education at the school level needs to be holistic. How would a child be taking piano lessons and earning 60,000 rupees in his college if this was not embedded somewhere down the line, right? So the education needs to be holistic. And actually, research is telling us that in this age and time, our kids will change their jobs at least 5 times on an average in their lives. So given that fact, they need to be, lifelong learners. So in short, we have to create lifelong learners and the instilling. So a holistic approach, I would say, is important, especially when you are dealing with teens, which is a stress and storm period. It's not an easy time, it's not a challenge. It's most of the so-called disciplinary problems actually occur in these areas versus at any other points of time. So I think that's what I'm saying. What is the 21st century skill? It's about collaboration. It's about building teams, right? So where should it be? It should be in the part of your curriculum. It's not an extra curriculum. It's not even co-curriculum. It is curriculum. That's it. Absolutely. वो जो एक्स्ट्रा को करिकुलर है या को करिकुलर है, ये दोनों टर्म्स को ऑब्सोलीट करार देना चाहिए और डिक्शनरी से बाहर कर देना चाहिए. Because when you're talking about education, everything is curriculum, everything is syllabus. Because when you want to teach them life or learning for life, जहां आप 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात करते हैं, जहां आप मिनिमम 5 करियर लाइफ की बात करते हैं, यहाँ पे कोई करिकुलम हो नहीं सकता. बिकॉज आपकी जिंदगी किसी करिकुलम में पैकेज नहीं है. तो आपको हर चीज को प्रायोरिटी देनी होगी. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कहीं ना कहीं जो सेल्फ इवैल्यूएशन या असेसमेंट है उसको इंपॉर्टेंस देनी होगी, जहां पे आप बच्चे का इंटरेस्ट या पैशन जिसे हम कहना चाहते हैं उसे फिगर आउट कर पाएं या एटलीस्ट उसके ट्रेसेस फिगर आउट कर पाएं, सो दैट दे कुड बी जॉइन टुगेदर इनटू क्रिएटिंग एन इंडिविजुअल हु इज मच मोर सक्सेसफुल. वी आर एक्चुअली एट द एंड ऑफ दिस कॉल. हम लोग आप सबकी बातें सुन के इट वाज एन अमेजिंग रिपोजिटरी ऑफ आइडियाज दैट केम इन. ये काफी लोगों के लिए गाइडिंग डॉक्यूमेंट बन जाएगा इन द फ्यूचर, दैट व्हेन यू आर ट्राइंग टू एम्पावर टीम्स, और वो भी हर स्ट्रेटा के टीम्स, तो वो एम्पावरमेंट कैसे कैसे होना चाहिए, आप उसमें क्या क्या ध्यान रख रहे होंगे. So now just a little bit contribution from our side of a story of a teen that comes from somewhere in the world, जो आज आपके लिए, because that's what Blub World works on, trying to find stories of teens, कि कौन teenager दुनिया में क्या अच्छा कर रहा है. So this story comes all the way from US. So this is a girl who lives in the US. Her mother had the passion of creating or making candy at home. घर पे टॉफी बनाने का शौक था. वो टॉफी बनाने का शौक बढ़ता गया, उस बच्चे के अंदर भी बढ़ता गया, एंड बढ़ते बढ़ते वो आज इस स्थिति में है. That teenager is a surfer. She enjoys the best luxuries in life, is a millionaire herself, and her candy is available across the biggest retail chain in the world, and that's Walmart's all across the US, and we call that lady the candypreneur. And that's Elena Moss, for all of you, the candypreneur who was on the cover page of Blub World just some months back. And that's what we do every month, trying to find teens who are doing amazingly well, try to share their stories with many more teens. क्योंकि अब आपने समझना होगा that education is no more about teaching. It's no more about delivering content. It's much more about creating relations, creating connections, creating cause and effect relations. और वो केवल inspiration से हो सकता है और किसी तरीके से नहीं. And most importantly, I would invite everybody who's there on this call or who will be listening to this call to be a part of the world's first exclusive parliament of teenagers. Blub World is trying to create a parliament of 100 teens from across the world who can do amazing things, and we will be funding their ideas with the help of UNESCO, Mahatma Gandhi Institute, Kindness Matters, and a lot of institutions from across the world who are right now sharing their time, attention, space, their people with us to create, and in the process of creating, the world's first exclusive parliament of teenagers, the World Teen Parliament. Thank you so much everyone for being a part of the Blub World Web Talks 146th episode. आज से पहले 145 एपिसोड्स में 2500 से ज्यादा स्कूल लीडर्स
इस प्लेटफॉर्म पर बोल चुके, अपनी आइडिया शेयर कर चुके. So thank you so much again for being a part of this platform. If you liked it and if you want to attend the future sessions, open your audio, say a big yes, and thank you so much and have an amazing evening. Thank you so much, people. It was lovely. Yes, and Yes. Yes, thank Doing you. a great job, reaching out to so many people. So I many, think so that's an many. excellent job that you're doing. Great. Yes. Thank you so much. And that is